Hello everyone. Hi everyone, good evening. Good evening all of you. I hope the paper went well. Hello everyone. Okay, मेरी आवाज Hi दोबारा everyone, good evening. हाँ जी. Now it is okay. Hi Milind. Hi everyone. I hope you all had a good exam. So I and Nikita ma'am both are here to analyze the paper with all of you. So before we start, just confirm once. Are we audible and visible? Is everything fine? There are no operational issues, I hope. एक बार सब लोग confirm कर दीजिए. Is everything okay? Then we'll start with our session. Hi Milind. Hi Vaibhav. Hi. Good evening. Good evening, Harry. Hello, Hi. Ash. Yes, says Vaibhav. Okay. So looks like things are fine. So we can start with it. So first of all, before starting, let me tell you that neither I nor Nikita ma'am appeared for the exam. But yes, we have a good team behind us who has given us a good feedback of the paper, rather many of the questions as well. अभी मैं निकिता मैम से बात कर रहा था, उन्होंने बोला भी कि मेरे पास तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं जो मैं सबसे डिस्कस करने वाली हूँ. सो बी एश्योर्ड कि मतलब आप लोगों को हम लोग ठीक ठाक सा एक एग्जाम के बारे में बता पाएंगे. बट बिफोर दैट ऑफ कोर्स जितने भी लोग यहाँ हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोगों ने तो एग्जाम दिया ही होगा. सो एक बार जस्ट टेल अस दैट हाउ वाज इट फॉर यू. आई मीन एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल अबाउट द एग्जाम. जस्ट गो अहेड विद दैट गाइस. Hi Bhavesh, hello, hi Arnav, Prateek, Mahek, Ananya, Prateek, Milind, Shrikant. Sir, if you mean anything is okay with the audio, then yes, that's great. अच्छा, वैभव कह रहे सुबह पेपर है मेरा. वैभव मेरा भी सुबह ही है. See you there. Okay, I am good, Sami. How are you? Yes, what is your idea about the exam? So we have got an idea till now. I mean, so Aditya is saying slot 2 was worst. ऐसा क्या? देख रहे हो निकिता मैम? वो कह रहे worst paper है. Is it? How was VARC? I don't think it was the worst. Definitely more difficult than yesterday. We agree with that, but not the worst. वही मैं कह रहा हूँ, possibly worst is yet to come. अभी कल का दिन बचा हुआ है, उसमें पता नहीं क्या होने वाला है. तभी तक नहीं कह सकते worst है क्या है. Moderate level, nothing too much out of context. ऐसा तेजस का कहना है. अर्नव कह रहे हैं moderate paper है. ओके, मैथ्स का पेपर कब सुबह है? ग्रेट. बहुत डिफिकल्ट था. ओके, माय पेपर इज लास्ट. मेरा भी मॉर्निंग का ही पेपर है. सो ओके. हाँ श्रीकांत, सुन गया मेरे भाई. सुबह का पेपर लाइक तड़पा कर मारेंगे सिचुएशन. वो क्या बहुत इजी, बहुत लेंदी था. ओके, मजा आ गया. ओके, ग्रेट. सो ठीक है, चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं, फिर इसके बारे में बात करना. हाउ वाज द एग्जाम? वी आल्सो गॉट एन आइडिया. आवर टीम अपीयर्ड फॉर इट. सो वी हैड पीपल फ्रॉम I mean mathematics department, we have people from reasoning department, verbal department. They all appeared and they all gave their inputs about the exam. So what I will be telling you actually that is all authentic data. ठीक है, जो हम लोगों को उनसे पता लगा है वो सब हम लोग आपको बता रहे हैं. So let's start with that without any further delay. ठीक है, जानना भी चाह रहे होंगे बहुत लोग आप. So first of all, if I talk about the overall difficulty level, तो जो feedback है हमारे पास वो यही है that the exam was on the moderate side. Of course, some of you might say it was difficult because if you're comparing it with the yesterday's papers, it might be difficult, right? कल का पेपर जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मुझे पता है कि काफी ही आसान था. इवन क्वांटिटेटिव एबिलिटी की अगर बात करेंगे तो बहुत आसान पेपर कल आया था. LR was slightly, I would say, between easy and moderate yesterday. लेकिन आज के दिन अगर मैं बोल रहा हूं तो दोनों ही स्लॉट्स में LR was slightly on the difficult side. rather दोनों ही स्लॉट्स में एक सेट प्रीवियस ईयर कैट से भी आया. तो आज सुबह वाले पेपर में भी एक गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट था जो प्रीवियस ईयर पेपर कैट से था, और अभी शाम वाले में भी एक आया. सो इसका सीधा मतलब ये है, इट वाज स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड. इसमें कोई दो राय नहीं है. टेक्निकल ग्लिचेस पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं. तो वो होके भी मेरे ख्याल से, बिकॉज जब भी हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम होता है, इट्स अ वेरी लार्ज स्केल, तो ऐसी दिक्कतें होती ही है. सो इन दैट केस आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एक काम जरूर कीजिएगा, बिकॉज इट्स अ स्पीड टेस्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माउस वगैरह ठीक से काम कर रहा हो. ठीक है, तो जब भी आप अपनी स्क्रीन पे बैठते हैं, सबसे पहले
फॉर ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम टुमारो, ये ध्यान में रखिएगा कि बैठने से पहले एक बार चेक कर लो सब कुछ ठीक है कि नहीं, आपकी स्क्रीन ठीक ठाक है कि नहीं है, आपका कीबोर्ड, आपका माउस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई थिंक कीबोर्ड इज नेवर रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ेगी तो शायद आपको माउस की जरूरत पड़ेगी, वो ठीक काम करता है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार आपको उससे ऑपरेट करना पड़ेगा। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम एट दैट एंड, सो ऐसे केस में सीधा सीधा कोशिश कीजिए आप किसी तरीके से बात करके और शुरू में ही उसको चेंज करवा लें। There were questions in VARC section which had grammatical errors, and I am pretty sure there would be some questions in which there would be errors in Quant and LRDI as well. Of course, they are creating 6 papers. Each paper is having 200 questions. तो 1200 क्वेश्चन अगर कोई बनाता है, इसका सीधा मतलब ये है कि उसमें गलती होने के चांसेस है, राइट? सो वी हैव सीन नेशनल एग्जाम्स इन इंडिया जिसमें उनको साल में 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं, उसमें भी गलतियां होती हैं। तो यहाँ 1200 क्वेश्चंस है तो गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा है, छोटी मोटी गलतियां पॉसिबल है। एंड इट वाज अगेन अ जम्बल्ड पेपर, सो प्रोबेबली दिस इज द ओनली थिंग व्हिच हैज बीन कांस्टेंट टिल नाउ इन द लास्ट 4 स्लॉट्स, कि पेपर बार बार जम्बल्ड ही आ रहा है, ठीक है? पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है, तो वहां पे सब कुछ जम्बल्ड ही है। लेकिन एक चीज जो मैंने आज सुबह वाले स्लॉट में देखी वो ये कि पेपर जम्बल्ड तो था बट द सेट्स वर नॉट जम्बल्ड, ठीक है? इसका क्या मतलब है? ये भी हुआ है कि डीआई का एक सेट, उसका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और एक है क्वेश्चन नंबर 42. So even that has happened, right? This happened in this slot as well. It did not happen in today's morning slot, but it has been happening in the other slots. तो jumbled के अंदर भी वो jumbled है. So that was that has made things slightly difficult for us because of course we have a habit of doing this. अगर मैं एक DI का सेट कर रहा हूँ और मैंने सॉल्व कर लिया तो फिर एक हैबिट बन जाती है ना, उसके बाद यार सीधे 4 क्वेश्चन बताओ ताकि मैं कर डालूं। मैं वो डेटा कहीं रख नहीं सकता कि मैं दोबारा एक दूसरे क्वेश्चन पे आऊं फिर एक तीसरे क्वेश्चन पे आ जाऊं, तो ऐसा होने वाला है। लेकिन दिस इज हैपनिंग। सो माय पॉइंट इज दैट लुकिंग एट द फर्स्ट 4 स्लॉट्स, a simple advice to all the people who are appearing for tomorrow's exam, right? There is a possibility of happening of anything under the sun. वो हो सकता है कल आपसे ज्योग्राफी पूछ ले हालांकि इसके चांसेस ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन कहने का मतलब ये कि कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना यार कि मतलब दिस इज गोइंग टू हैपन, दैट आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस स्ट्रेटजी एंड दिस विल मैक्सिमाइज माय स्कोर। एनीथिंग कैन हैपन टुमारो। जस्ट डू नॉट कीप एनीथिंग इन योर माइंड कि ये हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा ऐसी, मैं और निकिता मैम, कि जिसमें एक्चुअली इस तरह के चीजेस आए, आपको देख के लगेगा अरे क्या बात कर रहे हो, दिस हैज हैपेंड। सो इसका मतलब ये कि कुछ भी हो सकता है कल, ठीक है? वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स वन बाय वन, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू अ फ्यू मोर थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट वाज द पेपर पैटर्न, उससे शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बात करेंगे। तो मोर और लेस ये नंबर तकरीबन सेम रहा है लॉजिकल रीजनिंग पे 65 टू 70 क्वेश्चंस। और ये ध्यान रखिएगा, ये 65 टू 70 क्वेश्चंस जब मैं कह रहा हूं ना, दे आर इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज। ओके, आप लोगों को याद होगा द पैटर्न फॉर व्हिच समहाउ वी हैव प्रिपेयर्ड is 75 questions on logical reasoning, 25 on abstract, 50 on this, 50 on this. मेरे ख्याल से जो भी हम लोग स्ट्रेटेजी वगैरह बनाते हैं वो भी इसी के अराउंड बनाते हैं। और उन 75 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन नंबर सीरीज के होते हैं और कुछ क्वेश्चन नंबर सीरीज के यहाँ भी होते हैं। अब अगर वो जम्बल्ड पेपर है तो आप कह ही नहीं सकते कि उन नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को मैं कौन से में क्वांटिटेटिव में गिनूं और कौन से लॉजिकल रीजनिंग में गिनूं। सो आई हैव काउंटेड ऑल ऑफ देम इन लॉजिकल रीजनिंग, स्टिल there were not more than 70 questions in logical reasoning, so that means it has slightly decreased. तो पहली बात तो ये हुई कि उसका लॉजिकल रीजनिंग का जो हमारा पोर्शन है वो थोड़ा सा कम हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हैज आल्सो डिक्रीज्ड, जो 25 होता था 15 से 20 पे आ गया है, और वो जो पूरा हिस्सा था वो किसके पास गया? It went to quantitative ability where we had 60 questions in this, 60 questions in quantitative ability that we had. A big increase from 50. Even in that 60 you will see a big change, ठीक है? उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हाँ 60 क्वेश्चंस काफी होते हैं। एक बार मैं आप लोगों से आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि कितने कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए इन सारे सेक्शंस में, जस्ट टू हैव एन आइडिया फ्रॉम यू गाइस एज वेल। एक बार आइडिया दो। तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोग डर गए मेरी इस बात से कि हाँ ज्योग्राफी भी आ सकती है, तो वो मेरा मजाक था, कभी आज जाके पता लगे एनसीईआरटी उठा ली तुमने ज्योग्राफी की। So what are your attempts? एक बार बताओ। जितने भी बोल रहे हैं पेपर इजी आएगा, उनके मुंह में घी शक्कर।
प्रणाली कुछ फायदा नहीं होता, जो इजी आएगा तो सबके लिए आएगा, डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा। घी शक्कर उसको देना चाहिए जो ये कहे कि सिर्फ तुम्हारा पेपर इजी आएगा, बाकियों का डिफिकल्ट आएगा। It's a competitive exam. It does not make a difference that whether the paper is easy or difficult. So एक बार जरा बताओ मेरे को आप लोगों का स्कोर मतलब कितना क्या अटेम्प्ट रहा है। वैशाली कह रही है 75। वैशाली क्या है 75 आपका टोटल अटेम्प्ट है या इट सेक्शन वाइज अटेम्प्ट? सो जेन्युइन 130 लग रहे हैं। दैट्स अ गुड अटेम्प्ट तेजस, आई वुड से लुकिंग एट दिस पेपर। ठीक है, डिफिकल्ट था यार थोड़ा सा, तो मतलब मॉडरेट से तो पक्का ही ऊपर था, तो ऐसे केस में 130 इज अ गुड अटेम्प्ट। क्या कहते हैं निकिता मैम? नहीं 130 बढ़िया अटेम्प्ट लग रहा है। 130 is a good attempt for this paper. Ash is saying 110 plus. Okay. अच्छा खासा इजी एब्स्ट्रैक्ट कम कर दिया। ओके तो तुम चाह रहे थे एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा होना चाहिए है, ऐसा? राधिका हैज गॉट 120, वैशाली सेज टोटल 75। ओके, एब्स्ट्रैक्ट का 10 क्वेश्चन ही आया था कल, जो कि बहुत चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज। ठीक है, मैंने ये भी सुना है कि कल के एक स्लॉट में क्रिटिकल रीजनिंग पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सो दैट हैज आल्सो हैपेंड। ठीक है, ये भी हुआ है किसी में नंबर सिस्टम पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ आपको क्या दिला देगा। तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। 125 अटेम्प्ट्स इज विक्टर। सो गुड आफ्टरनून फॉर द सेकंड टाइम विक्टर, थोड़ी देर पहले भी मिले थे हम लोग। 130 गुड अटेम्प्ट्स। ओके 200 ये बढ़िया किया अर्नव। ऑफ कोर्स व्हेन आई टॉक अबाउट अटेम्प्ट्स तो मेरे ख्याल से सब लोग जेन्युइन अटेम्प्ट्स बता रहे हैं, 200 तो सबने ही किए होंगे। So Pratik is complimenting you again and again. Please acknowledge his compliment. Who is complimenting? Pratik, talking with you and your voice is the motivation for me. अच्छा अच्छा, मैं देख ही नहीं पाया मैसेज को। तीसरी बार। ओके थैंक यू वेरी मच प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। ओके, और जो श्रीकांत पवार लिख रहे हैं एक बड़ा सा वर्ड, दिस वर्ड नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट। वाज इट देयर इन द एग्जाम? यस। आई कांट इवन रीड इट मैम, मतलब एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 days इफ आई ट्राई माय बेस्ट। You have to break it. हमको क्यों तोड़ा भेजा? हाउ वेरी पजल्स कर दिए, 4 मिस हो गए 200 में। ओके ओके 210 कराया रोहन, गॉड लेवल। मेरे एक सवाल का ओके ओके चलिए, so let's talk about it. What is a good attempt according to us? What we have figured out. So as I said, the paper was slightly on the moderate side. Difficult तो शायद नहीं कह पाओगे यार उसे, moderate side पे जरूरी। जैसे लॉजिकल रीजनिंग जो है इसको moderate इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज पेपर थोड़ा सा लेंथी हो गया था। So because of that probably we are calling it moderate question। मतलब आप ये मत समझिएगा कि कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन को करने में, बट बहुत लंबे सेट जब हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल द सेट व्हिच वाज देयर फ्रॉम कैट, अ सेट वाज आस्क्ड फ्रॉम कैट 2000 टू बी प्रिसाइज, तो वो जो सेट उन्होंने पूछा था इवन दैट ईयर इन कैट इट वाज कंसीडर्ड टू बी डिफिकल्ट। तो यहाँ तो ऑफ कोर्स महाराष्ट्र सीईटी के स्टैंडर्ड से तो डिफिकल्ट होगा ही होगा, बिकॉज यू हैव लेस टाइम, मोर क्वेश्चंस, सो सच अ सेट कैन नॉट बी डन इन दैट टाइम। सो लेंथी क्वेश्चंस बन जा रहे थे, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई होगी। अगेन इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आई हैव ऑलवेज फाउंड इट मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मुझे तो आसान लगा ही नहीं कभी। जो फिगर टेस्ट होता है डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी को आसान लग सकता है किसी को मुश्किल, बट यस क्वांट वाज स्लाइटली ऑन द इजी साइड। So it is again one of the common things which has been there in all 4 slots. अभी तक जो चारों slots हुए हैं क्वांट तकरीबन मॉडरेट से नीचे ही रहा है। In none of these slots it has been to the difficult side. It has always been on the easy side. Okay, so शायद easy to moderate भी इसलिए लिख दिया क्योंकि बाकियों में moderate लिखे जा रहे थे, एकदम से किसी को easy ना लिखें, but in my opinion it was on the easier side only. And lastly, when I say verbal ability reading comprehension, so for people like me it has always been moderate or above. निकिता मैम बोलेंगी नहीं तो सुपर इजी आया था, लेकिन वो आपको सही बता पाएंगे कि कैसा एग्जाम था कैसा नहीं था, राइट? So ultimately according to us a good score was from 121 to 129 in this exam, with a score of 37 to 40 in logical reasoning, with a score of around 12 in abstract reasoning, quant 40 to 45, मेरे ख्याल से 50 से ऊपर भी ला सकते थे। verbal ability में 30-32 का expected score है, ठीक है, as a good score that you could have done. Okay, now this figure, this 121 to 129, I think in yesterday's slots this figure was approximately 160, between 150 and 160. Of course people might have different opinions about it. Some might say कि नहीं 140 के आसपास जाएगा, some might say 160 के आसपास जाएगा, ठीक है। लेकिन कल के पेपर के मुकाबले अगर मैं आज को देख रहा हूं तो डेफिनेटली बहुत फर्क है दोनों के बीच में, ठीक। So today's moderate figure according to us a good score would be
somewhere around 125, 126 according to us. Now I'll pass the baton to Nikita ma'am, and she'll be talking about reading comprehension first. Hi everyone. So can you show the table for verbal ability reading comprehension? Yeah, I think it is there now. Right. So 3 RC passages. Now these were moderate. Why? Because 2 of them were lengthy. Okay. So if I talk about the British colonial presence in America, that was slightly lengthy, right? The Kodak passage was slightly lengthy, which is why you can call them moderate. Otherwise, the questions in both of the passages were easy. The passage on Asian economy, on the other hand, it had terms like crash, boom, technical business economy terms. So there, yes, you could have felt that, okay, this is moderate or moderately difficult. So all in all, I would say RC passages were on the moderate side because of the time consuming nature, right? However, again, yes, if you have practiced RC passages, if you were consistent in your preparation, and if you're preparing for other entrance exams also, then I don't think RCs posed challenge in terms of the difficulty level of the questions as such, right? FIBs, yes. So when we were saying that 1 or 2 questions had grammatical errors, it was the FIBs. 1 or 2 of them had grammatical errors, and 1 or 2 were tricky also, right? So you could have been, as in, you could have marked those randomly and proceeded. Those where you felt there's a grammatical error and you're not able to figure out the answer. But I think apart from that, the FIBs, 2 let's say had grammatical errors, 1 or 2 were tricky, 2 were easy. That's how it was a mixed bag when it comes to FIBs. Okay, now coming to synonym antonyms. Okay, word arrangement puzzle. Yes, this was pretty easy, right? Food chain. So grasshopper eats grass, frog eats grasshopper, snake then eats the frog, then ultimately eagle eats the snake. So that's how it worked. It was more of a general knowledge question. So I think all of you must have got it correct. Easy. Coming to synonym antonyms. Yes. So synonym antonyms, our team tells us that they were easy. Words such as fickle, tranquil, cacophonous. When I ask you their antonyms, I'm sure you can tell me those. The word zenith was asked. We had done this so many times in the class, right? Nadir and zenith, acme, apogee. We had done these words a lot of times. So should have been easy. And yes, let me just look at the chat box as to what you are saying. Okay, all right. मैम इनको बोलिए लाइक भी करेंगे. Yes, do like the session, guys. Come on. हम इतने इकट्ठे कर रहे हैं आपके लिए questions. Okay, what is normalization? Saral, I will explain it to you shortly. Let me just get done with VARC, right? So words like gloomy, fickle, tranquil, zenith, cacophonous, I don't think these were difficult words. These were pretty high frequency words. In case you had attended my sessions, in case you had, let's say, opened WordPad made easy, these should not have been difficult for you. Okay. And then we talk about odd one out. So yes, odd one out, I see the question here. So elated, frolic, joy, mirth, girth. You can tell me right now also which is the odd one out here. Easy question. Joy, elated, mirth, right? All of these are related. All of these can be eliminated. And frolic also, fun and frolic. So you can associate it with that. Girth is the one that is left. That was the odd one out. Yes. So the waist, the size of waist is called girth. So easy. So I think synonym antonyms, odd one out, idiom was very weird. Up the apples and pears. I don't think people even use it any longer. So I don't think it should have been asked. The answer was upstairs. Okay, so if let's say I tell you to go up the apples and go to bed to sleep. So basically I'm asking you to go upstairs and sleep. So idiom was slightly weird. The good thing was you didn't get that MAH CET type unique parajumble, 4 individual parajumble questions. And our team tells us that one of them were actually from CAT 1998. So it was repeated. So remember, I told you that please focus on previous year question papers. Please focus on early CAT papers also. So those of you who may have attempted it would have actually figured this out, may have actually attempted that CAT paper, would have figured this out easily. So 3 easy questions, I think, in parajumbles. 1 was slightly tricky. So 3 were doable. Sentence correction again from CAT previous year papers. Okay, so CAT 1998 papers, previous year papers, they had picked up questions like
the MP's Rose, Mr. Pillay. So these questions we remember are there in CAT previous year papers. All right. Let me see what you are saying. कौन सा wrong हुआ? Okay. JB. Do you want me to pronounce this word? Supercalifragisticexpialidocious. That's how we pronounce this. It means something that's extraordinarily wonderful. Okay, and it's an informal word, so it's not something that you can write in a research paper or a research article. Okay. All right. Coming to sentence correction. Yes. So subject verb agreement errors were asked. Neither nor, and the subject after nor was plural, so it had to take a plural verb. So subject verb agreement errors. Then, as I said, repetition from CAT 98 papers. Apart from that, sentence correction questions were not difficult, so to say, easy to moderate. That's how I would put them. Critical reasoning was difficult, acknowledging it right away. So 4 CR questions, they were difficult. Why? Because the inference was given to you. You were asked what the premise was, what the premise for this conclusion was, right? Similarly, there was this weakening question, right? Malthusian theory of population. So there was this weakening question that was again moderate. So acknowledging that CR was time consuming, it was moderate, too difficult for some students. There was an assumption question on delayed gratification. So inference, assumption, weakening. So it's not like we hadn't practiced the question types, but yes, they were time consuming. They were moderate to difficult. Okay. And then let me look at my cheat sheet. Assertion reason. So assertion reason was easy. There was this question about diamond, that diamond has a high refractive index. Diamond is used for cutting. So who will tell me what the answer for this one should be? Yes. Is the assertion true? Is the reason true? Actually, both are true, but R is not the reason for A. So diamond is used for cutting because it is hard, not because it has a high refractive index. It shines because it has a high refractive index. So a GK question and a logic question combined, that was assertion reason for you. And yes, there were 2 analogy questions also. We've included that also in verbal logic. So one was poetry is to ballad. There the answer was reptile is to snake, right? And then one was an odd one out in the form of analogy. So for instance, 5 pairs are given to you. One of them is an odd pair. So there was this one pair, sluggish is to slow. The synonym pair was the odd one out because the other 4 were antonym pairs. So grouping and elimination would have helped you here. Right. So all in all, I think, of course, you would have marked all the questions. There was no negative marking. But all in all, it was doable that, you attempted 30 questions at least with sincerity, with accuracy. So 30 to 32 is actually a good score in this paper, considering that RCs were lengthy and moderate, considering CR was moderate. All in all, a moderate paper. That's what I would say. Okay. Any questions that you have, anything that you wish to ask, or we have moved on, then we'll move on to the other sections. All right. Yes. Some people are asking that what is the strategy for tomorrow's exam? Strategy for tomorrow's exam. So see, again, we are expecting a jumbled paper because on the first 2 days it was jumbled. So the strategies, yes. See, again, you can see here that RCs were moderate, right? So I always tell you keep RCs for the end. So focus on the easier parts, the vocabulary, synonym, antonym, idioms, the logic. If let's say parajumbles come out to be singlets, individual questions, by all means attempt them sincerely. Sentence correction, if you have practiced grammar enough, then today's sentence correction was also not difficult. So of course, vocabulary, grammar, verbal logic, and RCs. That should be your order when you don't have those unique MAH CET type parajumbles. That would be my suggestion for VARC. Saral sir will talk to you about the other sections. See, about the other sections, I would straight away say no strategy is a good strategy, because the kind of changes that are there, I mean, from yesterday till today, I mean, it's like kya strategy leke jayega aadmi. Yesterday we saw in one of the slots there were 20 questions on DS, data sufficiency. Today, in our today's slot paper, there was no question on DS. I mean, this much of difference. I've never seen this much of difference in any 2 exams of these. I mean, same paper. I mean, it has never happened before in my knowledge. For example, Narsi Munji has that has been different slots, but I've never seen this much of difference in the slots.
कि एक में डीएस इतना ज्यादा आ गया और एक में डीएस बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब 20 क्वेश्चन से सीधा 0 पे। दिस मच ऑफ डिफरेंस वी हैव सीन कि 10 एक में आ गए, एक में 5 आ गए, या कभी एक में 8 आ गए। 20 और 0 वाला डिफरेंस तो हम देख ही नहीं पा रहे कहीं, ठीक है। Another strategy that can work for all of you pretty well is that I see that currently number of people watching the video is approximately 150 and likes are 68. So just take it this way that the number of likes for this session would be your marks tomorrow. ठीक है, तो जितने मार्क्स आते हो उतने लाइक्स होने चाहिए, अदरवाइज 68 पे अटक जाओगे, ध्यान में रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। We'll start talking about now logical reasoning. As I just said, there was no question on data sufficiency in this slot, right? Which is a big change, big change. लास्ट में मैंने बताया जैसे आपको कि कल के ऐसे भी स्लॉट रहे हैं जिसके अंदर 20 क्वेश्चन डीएस पे आए और अब सडनली एक भी नहीं आया। और ये देख के ना साफ साफ पता लगता है दैट दे आर डेलिबरेटली डूइंग दिस। ऐसा नहीं है कि बाय चांस ऐसा हो जा रहा है, राइट, कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, दैट दे आर क्रिएटिंग चेंजेस इनटू डिफरेंट स्लॉट्स ताकि सीधा सीधा उससे वो स्टूडेंट को चेक कर पाए। अदरवाइज तो we always feel that I have the third slot or fourth slot, I'll be having a benefit that people in the first and second slot they would tell me कि ये पेपर में आ रहा है और हम लोग वही कर देंगे। और ऐसा जनरली आपने कैट में देखा होगा होता है। तो डिफरेंस इज कि कैट एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है, यहाँ 3 दिन अगर पेपर चलेगा और फर्स्ट डे वाले बता देंगे कि ये आ रहा है तो सेकंड डे वाले वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड, दे वुड मेक अ गुड स्ट्रेटजी, राइट। रादर आई वुड स्लाइटली डिफर विद निकिता मैम हियर कि ये भी पॉसिबल है, क्या पता कल जंबल्ड पेपर आ जाए। जितना चेंज हो रहा है पेपर्स में, नहीं निकिता मैम, मतलब चांसेस तो हैं, राइट अग्री। जितना ज्यादा चेंज आ रहा है डीएस सडनली critical reasoning came today, it wasn't there yesterday. Spellings came today, they weren't there yesterday. So इतने चेंजेस देख के तो जैसा मैंने बोला कि ज्योग्राफी भी आ सकती है कि चलो शायद वहां तक नहीं जाएंगे, बट इतना तो कर ही सकते हैं ना कि सडनली जंबल्ड पेपर दे दे, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सो एनी सच काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी इज देयर, सो कीप दैट इन माइंड दैट anything can happen and you have to work according to that. So just do not have any specific strategy, any specific number in your mind कि नहीं 140 ही लाना है, जेबी जाना है, तो क्या पता कल का पेपर इतना डिफिकल्ट आ जाए 100 पे भी जेबी मिल रहा हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है सडनली इतना आसान आ जाए कि 170 पे भी ना मिले। सो जितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट डू दैट व्हिच जनरली इज मोर ऑफ अ प्रीचिंग रादर देन एन एडवाइस। गिव योर बेस्ट, ठीक है, जाओ जो अपना बेस्ट हो सकता है वो कराओ, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो आएगा आ जाएगा, देखा जाएगा। yes, go with the flow as they say. go with the flow, exactly. जो easy लगता जाए वो करते जाओ, whatever you find is easy just keep on doing that, and whatever you find difficult keep on, let's say keep it for round 2, or in case you don't want to do it, in case you can't do it, then of course mark an answer randomly. Absolutely, because the kind of questions which are there, some of them are so lengthy that you can even do 15 questions in the time you complete a set of 4 or 5 questions. I mean, that is the difference of difficulty level between questions. Now this is another major change. Here you see 2 or 3 questions on direction sense. I've seen slots yesterday जिसमें 15 questions direction sense पे आए हैं, यहाँ 2 से 3 questions हैं। नंबर सीरीज पे 8-10 questions हैं, ब्लड रिलेशन पे 3-4 कॉमन चल रहा है सबके अंदर। You will see there is no question on input output, no question at all, whereas there have been sets on input output. किसी एक में आए हैं, किसी एक में नहीं भी आए हैं। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे जो सेट आया है 5 क्वेश्चंस का, इट वाज फ्रॉम प्रीवियस ईयर कैट पेपर, और आज जो सुबह वाले स्लॉट में आया है वो भी प्रीवियस ईयर पेपर से और वो भी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे। इट डज नॉट मीन घर जाके आज कैट के सारे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के सेट बना दो, उसका मतलब ये मत समझ लेना कि अच्छा 2 में ऐसा हो गया तो अब यही होने वाला है, मतलब वो बहुत ही लो रिटर्न हाई रिस्क वाली चीज हो जाएगी। सो नेवर डू दैट। अभी तो कल का पेपर है, उसके लिए मेरे ख्याल से तो यू नीड नॉट डू एनीथिंग। जितना टाइम आपके पास बचा है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवाय आराम करने के, थोड़ा सा रिलैक्स करने के कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। आप उसमें ऐसा नहीं 4-5 घंटे में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। सिटिंग अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, पजल बेस्ड 5 क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन सी टाइप्स है व्हिच हैव ऑलवेज बीन देयर इन ऑल द पेपर्स. So these are the common types, you will always find them. The only thing is in some of them they are pretty lengthy, some of them they are pretty easy, but games and tournament set, as I said today, in both the slots it was difficult, क्योंकि दोनों में ही कैट का प्रीवियस ईयर पेपर से आया है और कैट से आया तो आसान तो नहीं रहा होगा। महाराष्ट्र सीईटी के स्टैंडर्ड से मेरे ख्याल से डिफिकल्ट ही था। तो ये एक बड़ा चेंज है अपार्ट फ्रॉम हैविंग नो क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी। दिस इज द फर्स्ट। ओके,
उसके बाद आता हूं मैं सेकंड पे, दूसरे के बारे में बात करते हैं। वी हैव स्टिल 91 लाख स्कोर, तो आपका काफी कम है, 91 पे तो जेबी नहीं मिलेगा। सेकंड पे आता हूं मैं, बात करता हूं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बारे में। सो सम पीपल सेड हमें तो पसंद है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, सम कह रहे हैं कि हमें नहीं पसंद है। सो वी हैड अराउंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ओवर हियर, राइट। ऑड वन आउट पे सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना सा है number of questions might go up or down a little bit. Apart from that, there has been no change in abstract reasoning. Now comes the biggest change. अब उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं, and that is quantitative aptitude, QA and DI. And the biggest change in the paper was this number. You see here, in one of these slots, this number was 0, and in this slot, this number was 21. There were 21 questions from number system. Most of these questions were from HCF LCM. Approximately 9 to 10 questions were from HCF LCM. We had questions from factorization. We had questions from divisibility. We had questions from factorials. We had questions like those. I mean, factorials को उन्होंने सीधा ही पूछ लिया 100 factorial में कितनी zeros होती है। एक और पूछ लिया था जिसमें इतने factorial के पीछे कितनी zeros आएंगे। There was a question जिसमें इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि स्क्वायर बन जाए, क्या डिवाइड करूं कि एक क्यूब बन जाए, those kind of questions. But 9 to 10 questions on HCF LCM, that's a huge number. That's a big number. HCF LCM पे 9-10 क्वेश्चन आ जाना, ये तो बड़ा ही नंबर होता है मेरे ख्याल से, तो इंपॉर्टेंट भी है हम लोगों के लिए, ठीक है। 2 questions from algebra, 13 questions from arithmetic. I would say this is something which is regular. ये हो रहा है, 13 क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक पे आ रहे हैं तो रेगुलरली आ रहे हैं। 8 questions from modern mathematics. Again, there was a change that all of these 8 questions were from permutation and combination. There was not even a single question from probability. Whereas in the slots before this, we had questions from modern mathematics in which all questions were from probability. No question from PNC. I hope all of you can see that the change जो है, that's too big. So it's, I mean, advisable to not expect anything regular from the exam apart from a few things, just like arithmetic ज्यादा आता है, सब में आ रहा है, that's okay. DI पे 16 questions इस बार थे, तकरीबन सब में 12-16 question DI पे आ रहे हैं, that's okay. Logical reasoning में I can say there have been questions on linear arrangement, puzzles, blood relations, directions. नंबर थोड़ा ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम इसी तरह का रहता है. This is what the paper standard has been. Now, what is going to happen tomorrow? Of course, that's a big question. Even I have to write the exam tomorrow. Even I have butterflies in my stomach. कि क्या होगा, क्या नहीं होगा. आपके में थोड़ी सी ज्यादा होंगी वो, क्योंकि आप तो एस्पिरेंट है, मुझे तो सिर्फ एनालिसिस लेना है. लेकिन अब सुबह जाके देखूंगा तो हो सकता है नंबर सिस्टम पे एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है 20 आ जाए. So I might not be worried about it because I'm a teacher, I'm good at these topics. But for a person who has studied well about arithmetic because they feel कि यार नंबर्स मुझे ज्यादा नहीं आता तो मैंने तो छोड़ ही रखा था, और सडनली 20 क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करेंगे. तो जैसा मैंने आपको हमेशा बताया है, हर सेशन में बताया है कि छोड़ना किसी भी टॉपिक को नहीं चाहिए. यू शुड ऑलवेज डू द बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक एंड यू शुड डू सम ऑफ द टॉपिक्स इन डेप्थ. फॉर एग्जाम्पल, अर्थमेटिक को बिल्कुल पूरा कर लो बढ़िया से, राइट. तुम्हें अर्थमेटिक अच्छा अलजेब्रा अच्छा लगता है, अलजेब्रा अच्छे से कर लो, लेकिन बेसिक्स तो किसी के नहीं छोड़ने चाहिए. और वो चीज यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है, दैट हाउ डज दैट हेल्प. इफ यू वुड हैव लेफ्ट इट कि नहीं नंबर्स तो मैंने करना ही नहीं है, सी 21 क्वेश्चंस ऑन नंबर्स, पॉसिबली आप एक जगह ऐसे पहुंच जाएंगे जहां आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो मेरा फेवरेट एरिया था और इसमें मेरे मार्क्स से नहीं आ रहे, राइट. सो अगर इस बचे हुए टाइम में कुछ कर सकते हो, पॉसिबली जो छोटी छोटी बेसिक फॉर्मूलाज है बस एक बार रिवाइज कर लो. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि 100 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोस आती हैं, ये तो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, एक बार रिवाइज कर लो. सो जस्ट रिवाइज द बेसिक्स ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स, सो दैट एटलीस्ट यू कैन एंश्योर कि 40 प्लस स्कोर तो मेरा यहाँ पे आराम से आ ही जाएगा, राइट. एलआर में ऐसा कुछ आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं होगा करने का. मेरे ख्याल से अगर आप इंग्लिश में कुछ कर पाएंगे ऐसा तो शायद वोकैब है, या क्या मतलब आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगी. Sir, vocabulary, yes, but I would suggest that, of course, don't go for new words. Just revise in case you've made any notes for the words that you've learned so far. Just revise high frequency words, because that's all that we can do from our end. See, if tomorrow they ask some archaic words that are no longer used, of course,
I can't, spend these 2 hours learning archaic words. I would not be able to cover them all. So instead, focus on high frequency words, and we had a fair number of them today also, right? So these words like zenith, gloomy, fickle, cacophonous, these are all high frequency words. So you can revise those. In case you've made any notes regarding grammar rules, grammar concepts, then yes, revise that. I don't think apart from that, you should do anything at this stage. Of course, the kind of words that they have asked, the word that you told us today, I mean, which we are not even able to pronounce, and we won't be able to pronounce in this lifetime at least. So, ऐसे words so in this time we can't do, of course. Whatever we have done before, मतलब उतना ही कर पाएंगे, उससे नया तो शायद ही मुश्किल होगा करने के लिए. चलिए जी, ठीक है, ये बात आई हमारे पास quantitative aptitude and DI की, okay. And when I talk about DI, as I said, there were 16 questions. Common है, line graph पे questions थे, bar graph पे questions थे, इसमें कुछ खास नहीं था. There was a question which was incorrect, but almost no change. Almost everything was same as that of the previous sessions. Okay. Now comes the most important part, which you probably would be eagerly waiting for. That what exactly is going to be the cutoff for the different exams. So let me give you a disclaimer before that. कि ये जो भी figures हैं, ये हमारा एक opinion है. Of course, figures can be slightly above, slightly below this. As a faculty, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितना भी चाहें, हम लोग एक बहुत फेयर असेसमेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव तो नहीं दे पाते, क्योंकि जो चीज हमें आसान लग रही होती है वो कई बार एक स्टूडेंट को आसान नहीं लग रही होती है. मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि चलो मैं उस लेवल पे जाके सोचने लग जाता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल. सो समटाइम्स वी फील दैट इट माइट गो स्लाइटली अप और बिलो, बट यस, एज अ टीम वी हैव ऑलवेज सीन दैट वी हैव जनरली बीन वेरी स्पॉट ऑन. I mean, in other exams as well, in CAT, ZET, IFT and all, we have seen that sometimes it has happened. I remember clearly that last year for IFT, we said that the cutoff would be somewhere around 142, 143. And the final cutoff was, I think, around 142.5. So no one can be that spot on. Matlab, is had tak bhi hua hai. So that's quite a possibility. But of course, we have to be modest about it. हम सीधा नहीं बोल सकते. तो आप लोग अपने खुद से अंदाजा लगा लेना. Yes, for General Bajaj, we are expecting that a score of 130 would be good enough to give you a call from General Bajaj. Of course, we can have plus minus 5 into this. Even a 125 is possible. Possibly हो सकता है 135 पे जाए. Normalize भी होगा अभी score. Some people were asking about normalization की क्या करते हैं. So let me tell you that they do normalization slot wise, right? तो slot 1 के बच्चों का score उन्हीं के respect में देखते हैं. Slot 2 का फिर उन्हीं के respect में. Then they just normalize the score of the toppers of all the slots. ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं कि टॉप 5% स्टूडेंट्स का यहाँ कैसे स्कोर्स आ रहे हैं, वहां कैसे स्कोर्स आ रहे हैं, वहां कैसे स्कोर्स आ रहे हैं, एंड आफ्टर दैट दे क्रिएट अ कंबाइंड रैंकिंग फॉर दैट. सो जस्ट डू नॉट अज्यूम दैट यू आर स्कोरिंग 130 in slot 4, when another guy is scoring 145 or 150 in other slot, और उसका स्लॉट आसान था तो उसको तो फायदा मिल गया. वो फायदा नहीं मिलता, राइट? सो दे हैव अ गुड प्रोसेस ऑफ अचीविंग दिस. तो वहां पे जाके उसको नॉर्मलाइज करके they would be putting everyone at the same level. So let us say you are scoring 99.9 percentile in your slot, the other guy is having 99.9 percentile in his slot, so both of you are at the same level. The score would not matter then, क्योंकि दोनों आप अपने अपने स्लॉट्स में 99.9 percentile पे हैं, तो इसलिए आपको चिंता करने की उसमें जरूरत नहीं रहती. Okay, after that SIMS3 according to us would be somewhere around 127 for a 99.8 plus percentile. V School would be giving you a call at somewhere around 119. Of course, we have thought about this a lot, and after that only we have achieved at these reached at these figures. So you can just take them almost true, right? That almost these would be the figures finally when the results would be out. And we are talking about the scores of this slot only. Of course, a person from slot 2 can't say कि मेरा 127 आ रहा तो मेरे को यहाँ से कॉल आ जाएगा. For them it might be 142 or 143. For a person from this slot it would be around 127. Then the next Pumba, that is Pune University, that is 112. SIES would be somewhere around 109, and then the next 10 ranks would be 93 to 109. Next 15 ranks would be from 81 to 93. This is our assumption, right? That at these scores you would be getting these much of percentiles in your exam. So anything that you want to say, you want to ask, or you want to comment upon, or you want to inquire, or anything? आप में से कुछ लोग कुछ कहना चाह रहे हैं अगर? So कि कम है या ज्यादा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है इसको देख के? Because I remember someone was saying कि मेरा 100 attempt है, तो क्या मुझे JBIMS मिल जाएगा कि नहीं?
so possibly I would have annoyed that person, है ना, थोड़ा बहुत नाराज हो गए होंगे इस बात को लेके कि क्या है 130 लिख दिया, मैं 100 ही करके आया हूँ। तो रिजल्ट कब तक आएगा? गौरव, मेरे ख्याल से यार जिस तरह से एग्जाम जितना लेट हुआ है ना, एक डेट देने के बाद, तो ऐसे ही रिजल्ट के साथ भी होने वाला है कि इस डेट को आएगा, फिर इस डेट को आएगा, फिर इस डेट को आएगा। सो बेटर इज नॉट कमेंट अपॉन दैट। कल के स्लॉट का कट ऑफ बताओ ना, जो कल गया या कल आने वाला है, जो गौरव डागा, किसके बारे में पूछ रहे हो? अरिथमेटिक टिप, अरिथमेटिक की क्या टिप होती है, पढ़ो। नींबू मिर्ची वाली स्ट्रेटजी ही काम करेंगी अब तो। दैट्स नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जाम हॉल, यू हैव टू पुट इट आउटसाइड इवन इफ दैट वर्क्स फॉर यू। इंडिविजुअल स्लॉट्स के कट ऑफ बताओ सर। तेजस, वी हैव टेकन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस स्लॉट्स एज वेल, और उसमें हम लोगों ने उसके कट ऑफ दिखाए भी हुए हैं। सो जस्ट गो टू आवर चैनल, यू विल फाइंड द वीडियोस ऑन दैट। 10 students from each slot will go to JBIMS. Ankish, not necessarily, आप ऐसा मत समझिए, ऐसे जैसे मैंने बोला, नॉर्मलाइजेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि हर एक स्लॉट में से टॉप के 10 उठा लेंगे, वो ऐसा नहीं करते हैं। Can you provide us with college lists? So we have taken sessions on that as well. So again, I would request you to go to our YouTube channel. उस पे आपको उस पे वीडियोस मिल जाएंगे पूरे कि किस कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाती है। Even that we have been discussing for a long time. Okay, clocks and calendars questions have been there, Vaibhav. I don't know आज आया है कि नहीं आया है, लेकिन आप पिछले कुछ स्लॉट्स में I have seen questions on clocks and calendars. Okay, 25th का पेपर इजी होगा या हार्ड? रोशन, फिलहाल तो ये बात महाराष्ट्र सीईटी अथॉरिटीज के अलावा कोई नहीं बता सकता, नॉट इवन गॉड। वर मॉडर्न मैथ्स प्रोबेबिलिटी बेसिक और लिटिल कॉम्प्लेक्स? नथिंग इज कॉम्प्लेक्स संस्कार। सारे क्वेश्चन जो है वो बेसिक्स पे ही हैं, वो लेंदी हो सकते हैं लेकिन उन्होंने कॉम्प्लेक्स कहीं नहीं बनाया, दैट्स फॉर श्योर। ओके, चलिए जी, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, दैट बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट दीस कट ऑफ। सो 2022 के कट ऑफ यहाँ पे है, 2021 के कट ऑफ यहाँ पे है हमारे सामने, राइट। अब ये बात हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्लॉट 3 के बारे में कर रहे हैं, स्लॉट 4 के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी स्लॉट हुआ है, राइट। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स ऐसे रहे हैं, इस साल के कट ऑफ्स ऐसे। सो विद रिस्पेक्ट टू द डिफिकल्टी लेवल यू कैन से it was slightly up with respect to last year, of course, because of that the cutoffs have dropped a bit. Probably जो आज का सुबह वाला स्लॉट था वो हो सकता है उसके नजदीक ज्यादा रहा हो, राइट। और कल वाले जो थे वो उससे ज्यादा आसान रहे होंगे। तो कल वाले का मान लीजिए यहाँ कट ऑफ 145 होगा, तो आज का यहाँ 130 है। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 135, so something like this has been happening. So yes, that's all. I think that's all that you wanted to know, guys. So if there's anything else, so we are here, I and Nikita ma'am would be happy to answer your questions or any queries or something that you want to say. कोई भी सवाल अगर आपका है तो एक बार बताओ हमें, otherwise that's all from our side. Yesterday's cutoff बताइए. So Gaurav, as I said that you will find videos on that on our channel only, I think, but still if I give you an idea, तो आप ये मान के चलो जैसे JBIMS के लिए मैं बता रहा हूँ 130 अभी आज का है, तो yesterday it was around 145 to 150. So there have been a major change in the difficulty level from yesterday. Yesterday students reported that the VARC section was pretty smooth, and again one of the RCs had actually been repeated from previous year papers, an RC on sarcasm that was asked. So all in all, yes, it was much easier than what we have today in VARC also and overall also. Okay, yes, मतलब even I have got the same feedback about the other sections as well कि बाकी sections में भी कुछ इसी तरह का रहा है. So मेरे ख्याल से यही कहानी रहेगी फिर आगे. तो देखते हैं कल क्या होता है. Okay, everyone. So I think that should be all for the day. I mean, all the very best to all of you who are appearing for the exam tomorrow. Even I am appearing for the exam tomorrow, so I'll be there with you with the analysis of the tomorrow's morning session in the afternoon. Nikita, मैं आपने लिखनी है exam? No, sir. There was no center in Jammu. I registered, and then when I was looking at the centers, there was no center there. अरे बाप रे. Okay. तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम लोग. जिन लोगों का सुबह वाला पेपर है उसके बाद हम लोग मिलेंगे. I think I'll be taking the analysis at around 2 because the center is approximately 2 hours from my house. तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 2 घंटे के बाद हम लोग फिर कल का भी एनालिसिस करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड माय वेरी गुड विशेस all of you. Yes, and yes, don't overthink at this stage. Don't try to do things at the last minute. Just relax, okay, and be prepared for surprises. That's it. Stay calm.
Yes, surprises are definitely going to be there. I mean, looking at the last 4 slots, we can say surprises पक्का ही होंगे, और वो सरप्राइज होंगे, सरप्राइज गिफ्ट नहीं होंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा. So they might shake you a little bit. तो उसको सोच के जाइएगा कि हाँ कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं, we'll just do our best. Okay. Okay, and everyone, bye bye, and have a very good day now. We'll meet you tomorrow 2 p.m. for the analysis. I just see the message in the chat box. So that's all from our side. Thank you. Bye. Bye bye, bye everyone.